जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे मूड में हो, अच्छी एनर्जी में हो और अच्छा महसूस कर रहे हो। आई डोंट सी मेनी ऑफ यू ज्वाइनिंग एज ऑफ नाउ, लेकिन मोना हैज ज्वाइंड। वी आर वेटिंग फॉर राधिका। और इन द मीनवाइल एक बार चेक कर लेते हैं इफ सुशांत वांट्स टू कनेक्ट और से एनीथिंग। ओके ओके, सो वी हैव डेविल और डेविल के साथ क्वीन ऑफ कप्स। सो इट इज a lot of hidden things coming out. वो एनर्जी एक दिखाई देती है। दूसरा, you have to be careful about your emotions. This is one thing that Sushant is giving very strong, that you have to be careful about your emotions, because ऐसा लगता है पास्ट से कुछ चीजें निकल कर बाहर आएंगी या पास्ट से कुछ चीजें जो है इन्फ्लुएंस करेंगी. दिस कुड बी योर पर्सनल लाइफ, दिस कुड बी बिगर थिंग्स, लेकिन पास्ट से इन्फ्लुएंस होगा. And that is why it is very important to keep yourself emotionally absolutely balanced. Okay, so that's the energy. And Radhika, you are here. Okay, Radhika is here. Hi Vitu, Radhika is here, so I am adding Radhika. Hi Radhika. हेलो, नमस्ते सबको। सबसे पहले बहुत बड़ा प्रणाम जलेबी के दोनों माताओं को। सदा खुश रहो. So I am going to give it over to Mona and Radhika. मेरा कैमरा ऑफ रहेगा, माइक ऑफ रहेगा, मैं पीछे रहूंगी. इफ नीडेड आई विल जंप इन. ठीक है, ठीक है मोना, ठीक है राधिका, चलो ठीक है. So you guys can carry on. Okay, namaste everyone. Namaste soul family. So राधिका जी, आप शेयर कीजिए आपका शेयरिंग. राधिका जी खुलना पड़ता है ना स्ट्रीम. ओके, जलेबी के मोना मम्मा, ठीक है. Okay, so initially it's been like almost a month since, I think more than 3 weeks since I have been telling Pooja दी कि मुझे कुछ शेयर करना है. But there was a juggling. पहले सिर्फ एक ही एक्सपीरियंस था जिसके बारे में मुझे शेयर करना था, and there was a juggling whether I should share it or not. तो ये क्या करते हैं कि ठीक है, तुम्हें एक ही एक्सपीरियंस था ना, मैं और एक्सपीरियंस दे देता हूँ बोल के यूं समझ लो. इट हैज बीन लाइक 1.5 months of non-stop tests on something or the other. Okay, तो रुकने का नाम ही नहीं था. It was going in that way. So I actually wanted to share more about the learning, and but then there have been magic also. There have been incidents in which he has done like वो तो चलता ही रहता है, you know. It is like non-stop. Every day it is you can feel it anytime, you know, कुछ भी हो जाता है. So I think I'll start with the first one, जो actually अभी recent यानी कि आज जो हुआ. तो लास्ट वीक पूजा दी ने वो गाना बताया था, तुमसे ही वाला गाना, आधा सा रिश्ता, आधा सा वादा, कभी आधे से ज्यादा, कभी तभी से लाइक वो जो लास्ट लाइन उसमें आता है ना कि जो भी मैं बन पाया हूँ तुमसे ही, तुमसे. दैट लाइन आई फेल्ट वेरी मच. ओके, एंड आई वांटेड टू मेक इट देन इटसेल्फ, पर मैं भूल गई. आई फॉरगॉट दैट थिंग. And today afternoon, SB Mega करके है, she had uploaded a VM on the same song, but for a different stanza. जो रोमांटिक वाला डिफरेंट, जो पहला वाला है वो उसको उसने उसके लिए बनाया, ठीक है. And then I felt that, you know, he's like reminding me कि तुम्हें ये बनाना था, VM इसके ऊपर बनाना था और तुमने बनाया नहीं. And then I searched for the song and I wanted it in a, कि वो फास्ट वर्जन ना होके थोड़ा वो स्लो एंड वो बोलते हैं ना लोफाई वर्जन में थोड़ा फीलिंग थोड़ा आ जाता है. तो वो वाला मैंने ढूंढ के निकाला. लाइक एटलीस्ट 3-4 लिंक मैंने सुने एंड देन आई फाइनली मेड इट. सो दैट इज वर, यू नो, द फर्स्ट थिंग. सो इट्स लाइक सडनली वो हो गया. सडनली ही रिमाइंडेड, लाइक इट वाज अ मैजिक ओनली, क्योंकि मैं सच्ची में भूल गई. लाइक यू नो, इट वाज मेंट टू कम वया इन दिस वे मे बी. फिर उसके बाद अगर मैं मैजिक का बोलूँ तो लाइक मैं ना यूट्यूब में बहुत सारे ब्लॉग्स देखती हूँ, ठीक है. ट्रैवल वाला ब्लॉग हो गया या एनीथिंग रिलेटेड टू, यू नो, सम कंटेंट, समथिंग क्रिएटिव वाला, या ऐसे मैं देखती रहती हूँ, वीडियोस देखती रहती हूँ.
And there is this one particular channel which I follow, and what I noticed this since last few weeks कि जो बंदा वो वीडियो कर रहा है, the person who is speaking in that video, he is either उसके वॉच में या तो 747 रहेगा, या वो जो कहीं पे वो खाने का बिल पे कर रहा होगा उसमें होगा 47, या फिर वो टाइम बोलेगा अभी 11 बज गए, 11 नहीं होगा, वो 11 होगा. And he started showing me numbers in the vlogs, okay, and in the like that person he is unable to feel it, like हम लोगों को पता है ये नंबर का relevance. So that person उसकी उसमें से मुझे वो दिख रहा था. Now what happened is in the past 3 days I can say उसके वीडियो का टोटल ड्यूरेशन बनता है 11:11 या फिर 7:47 या 4:47. One way or the other it is coming up, okay, and I was like अच्छा शायद he is watching it along with me, maybe. That is the reason. He's also enjoying it, maybe. That is the reason. So, yeah. And so actually, I had listed down so many things, and I thought I will take one by one. So यहाँ पे सबको मैजिक सुनना पसंद है लर्निंग से ज़्यादा, तो मैं मैजिक पहले बोल रही हूँ. So one beautiful magic which he started doing this year is like so हमारा एक फेस्टिवल होता है विशु. So विशु is the new year. April 14 को होता है. You guys have it as बिहू and पता नहीं क्या क्या नाम है मुझे नहीं. बैसाखी. Yes बैसाखी. तो वो वाला वो जो होता है 14 या 15 को होता है. So our in Kerala the thing is like जब उस दिन जब उठते हैं न्यू ईयर में, we wake up by ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं around 3:30 या 4:30 उस टाइम पे उठते हैं, and आँख बंद करके we go to the घर पे जो मंदिर होता है वहाँ पे जाते हैं, and the first thing which we see is Krishna side. Okay, and I had been doing this obviously since childhood, ये चल रहा था, बट जब से ये कनेक्ट हुआ है ना मेरा मन रहा है कि विशु के दिन मुझे इसका दर्शन मिल जाए. Okay. And so just one day before Vishu, I was telling him कि I wish to see you on this day. कुछ अलग सा कुछ करो, okay. Something I requested him, okay. Now what happens is जो मंदिर जो है मेरे घर के पास ही एक मंदिर है, केरला स्टाइल में वो चलता है उनका, all the prayers, everything. I went there and there are like other idols also. शिवजी है, देवी माँ का है, गणेश जी है, everything is there. And लास्ट में मैं कृष्णा के दर्शन करती हूँ, okay. And when I reached in front of this idol, suddenly his eyes open up. I am seeing the eyes, क्योंकि उस idol में eyes आंखें नहीं है, like आंखें हैं, आंखें बंद है, okay. So it's like eyelids close रहते हैं, but suddenly इसमें आंखें खोल के मुझे देखा जा रहा है. I am standing in front of the idol and he is looking at me, okay. And this was like the first one. And उसके बाद क्या होता है कि जहाँ पे भी मैं जाती हूँ, अगर विष्णु जी के मंदिर हो या कृष्णा के मंदिर हो, जहाँ पे भी आंखें क्लोज्ड है वहाँ पे ये आंखें खुल के दिखता है. And even suppose I am watching like usually once this live is over I switch to द्वारकाधीश वाला आरती का live. संध्या आरती चलती है around 7:50 something. So after this one I switch to that one while cooking, okay. तो उस टाइम पे क्या हुआ कि एक बार मुझे उस आइडल में आई फील एज इफ ही इज विंकिंग मी थ्रू दैट. ओके, नाउ आई गेट टू नो लेटर कि उस आइडल में एक्चुअली आंखें हैं ही नहीं. ओके, एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग ऑल दीज थिंग्स एंड जस्ट तो ये पूरा मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट हैज बीन आइदर ऑन कृष्णा आइडल या विष्णु आइडल. अभी कुछ महीने पहले क्या हुआ कि सेम मंदिर जो घर के पास है वहां पे मैं गई थी एंड आई वाज अपोलोजाइजिंग टू शिव जी फॉर समथिंग. तो मैं शिवलिंग के सामने खड़ी थी एंड मैं जब अपोलोजाइज कर रही हूँ ना वहां से उसमें से भी आंखें खुल के देख रहे हैं. एक्चुअली इट हैज लाइक अ गोल्ड कवरिंग, ओके. आंखों का वहां पे गोल्ड कवरिंग है, वो गोल्ड कवरिंग हटा के खुल के इट इज लाइक वो ओपन होके उसमें से मुझे देख रहे हैं. And I'm like, obviously, you can't give the reaction. You're feeling the happiness. You're feeling that, he's looking at you, but you can't give the reaction because इतने सारे लोग खड़े हैं. The others are there who may not be seeing the same thing, but, you are able to see. तो मैं बस वो आंखें देखती रहती हूँ फिर वहां से निकल जाती हूँ. I just say thank you and I leave. Okay. So the magic. So the way the magic, like, anyway, I've come to the temples and everything. So the past in this entire 1 year,
इसने क्या किया इज लाइक यू समझ लो कि आई वॉज लाइक दिस कैट इन द बॉक्स. मैं कहीं जा नहीं रही थी एंड आई वॉज यू नो इवन इफ आई वॉज ट्रैवलिंग आई यूज्ड टू ट्रैवल विद फैमिली ओनली. पहले मैं ट्रैवल करती थी कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए, वो दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, बट थ्रू आउट दिस एंटायर ईयर ही हैज बीन मेकिंग मी ट्रैवल. लाइक मुझे डब्बे से बाहर निकाला गया है. ओके. And during the travel, like now it has been like 3 long trips it has happened, and multiple times some test मैजिक तो चलता ही रहता है. मैं किधर भी देखो 47, 11, 11, 74, 94, कहीं ना कहीं वो दिख ही जाता है. ओके. एंड नाउ दिस टाइम व्हाट हैपेंस इज दिस वाज इन सितंबर, and this was the main thing which I wanted to share actually. So this was in September, uh, around my birthday. So मेरा trip था, I was supposed to start on 15th from here. Okay. And the way the test starts is like इस बार जो test हुआ travel के time पे, it was like a strong test. It was not just me who was going through it, but even at home the others were going through it. So मुझे 15 को जाना था, and I like right now it's like me and my father are staying at a different place. So I didn't want my father to stay alone, and my father also was wishing कि वो केरला जा पाए उस time पे. You know, he has been also waiting. So उनका टिकट बुक था 14th शाम के लिए. ओके. एंड 14th शाम को 4:30, 8 o'clock is the train. 4:30 suddenly he gets a message saying that hometown में you know wherever we are staying, just within 2 kilometers distance, at least 5 people have been you know infected with Nipah virus. तो वो निपा सडनली आ गया था उस टाइम पे. ओके. तो वो एंड दे सेड यू बेटर डोंट कम, क्योंकि दोज आर एक्चुअली जो काम कर रहे थे हॉस्पिटल में काम कर रहे थे उनको मिला है अदर्स. ओके. एंड देयर वर 17 people all together staying with those people. all over 17 था, और उन सबको यू नो दे वर बीइंग मॉनिटर्ड. सो जो हमारे जो वहाँ के जो अपार्टमेंट की एसोसिएशन है उन्होंने बोल दिया कि सेक्रेटरी थे, उन्होंने बोल दिया 4:30 को he called and said that he told my father better you don't come, don't take the risk. पता नहीं क्या सिचुएशन होगा, कंडेमनेशन जोन होगा या कुछ भी क्लियर नहीं था. ओके. तो लास्ट मोमेंट में उनका प्लान कैंसिल हो गया. तो भैया ने बोला ठीक है एक काम करो, आई डिडंट वांट माय फादर टू स्टे, दैट वाज द मेन थिंग. तो भैया बोले ठीक है तुम पापा के लिए पुणे के लिए टिकट करवाती हूँ. भैया पुणे में. So he said I'll book the ticket for him, and he had planned to bring Ganesha idol on 19th. So I said okay fine, in that case okay fine, ठीक है गणपति पूजा अटेंड कर ले. तो उनके लिए टिकट बुक था 17th के लिए. Now 15th I leave, and 15th 16th by 16th evening is when my father says that भाभी जो है उनका like she fell sick suddenly, and she has been admitted in ICU. So the situation was that she had been having asthma problem, and but she used to feel that whatever is happening is because of that thing. Okay, breathing issues की वजह से. But suddenly she fell sick on 15th, and ECG लिया गया था, and ECG में it was you know it was shown that already one major heart attack has happened. And उस time पे वो detect नहीं हुआ, like we couldn't realize it, nobody could know that she was going through this thing. Okay, even she didn't feel it. ऐसा नहीं है कि you know she fainted या even pain या nothing, she didn't feel anything, but a major heart attack has happened. And so I get to know this on 16th evening when I somewhere and at that time क्या होता है कि hospital in which she was admitted, they said we will keep her in ICU for 2-3 days for under observation, and then उसके बाद decide करेंगे कि क्या करना है, angioplasty करना है या नहीं, what to do. And so I was obviously on a spiritual journey, so I was traveling to some temples, and मैं जहाँ पे भी जा रही थी उन मंदिरों में I was praying for her in that way. So सारा जब मैं ये सब मैं कर रही थी, and
The thing is, what happened is like the test doesn't stop there. Okay, it gets aggravated or it goes to a higher level. होता ये है कि on 18th when I reached another location, उस लोकेशन में जब मैं पहुंची थी उस दिन बहुत बारिश हो गई. ओके, एंड दैट ऑल्सो इट रेन 2 months आफ्टर. उनको जुलाई अगस्त में उनको बारिश नहीं हुई थी. Sometime in first week of July, that place had got rain, but later July, August, it didn't rain. The monsoon rain they didn't receive properly. But जिस दिन मैं पहुंची, September 18 Monday, उस दिन बारिश हुई, heavy rain. Okay, and the road was slippery. So what happened is, Humpty Dumpty had a double fall. So I fell. पहले मैं एक जगह पे गिरी, स्लिप होके मैं गिर गई थी. उस वक्त मेरे नी पे कुछ लग गया था, एंड बट स्टिल आई वाज ट्राइंग टू वॉक. एंड देन जैसे वो टावर कार्ड होता है ना, टावर कार्ड में लाइक ऊपर से कोई गिरता है, समथिंग सिमिलर हैपेंड टू मी, समथिंग सिमिलर टू हैपन टू मी, एंड आई फेल अगेन. विद इन 15 minutes आई फेल अगेन. सो 2 बार मैं गिर गई और उसके बाद से पेन शुरू हो गया पैरों में, स्पेशली द लेफ्ट नी. पेन शुरू हो गया, एंड somehow I started walking, and or that also heavy rain, पूरा road पूरा पानी. Okay, and I reached the hotel at night. अभी होता ये है कि parallelly at Pune where my brother, so मेरे पापा का trip cancel हो गया because she fell sick. Bobby fell sick, so brother said that पापा भी आएंगे तो पापा का to take care of everybody it will be difficult for him. So that understood for him it is, क्योंकि वो already she is in ICU, उसका टेंशन तो उनका तो वो चल ही रहा था. एंड तो पापा का 2 बार प्लान बना, दोनों प्लान कैंसिल. तो उनके लिए वो टेस्ट था, उनके इट डिडंट हैपन फॉर हिम. एंड यहाँ पे इन लोगों का टेस्ट चल रहा था. आई मीन ओवरऑल इट वाज अ टेस्ट फॉर मी आल्सो कि इन ऑल दीज सिचुएशंस हाउ आई हैंडल. एंड अभी क्या होता है, 18 को 2 बार गिरने के बाद में रात को मैं सो नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इट हैड लाइक फ्रोजन, द नी हैड फ्रोजन, जम गया था. हिल नहीं रहा है, मैं अपना पैर नहीं हिला पा रही. आई एम नॉट एबल टू वॉक. ओके, एंड मेरा ये था कि another 3-4 days, 3 days, another at least 3-4 days I had to travel, and I am at a distance. I am at a distance. ऐसा नहीं है कि मैं पुणे जा पाऊँ या अपने घर यहाँ पे आ पाऊँ and all those things, या केरला जा पाऊँ. In that way it was not practical. Distance was so much. I was in summer, and so नेक्स्ट डे के लिए मेरा एक्चुअली पूरा प्लान बन गया था. दैट ऑल these आर द प्लेसेस वेयर आई एम गोइंग. एंड नेक्स्ट डे आई वाज सपोज्ड टू ट्रैवल एटलीस्ट 60 to 70 किलोमीटर्स. मैंने एक ऑटो वाले को बोल के तो रखा था. ही सेड दैट ही विल कम एट 7:30. ओके, रात को तो मैं पूरा सो ही नहीं पाई बिकॉज ऑफ द पेन. आई वाज अनएबल टू मूव, लिटरली आई वाज अनएबल टू मूव. ओके, एंड for 1 second I did think whether I should stay there in the room itself the next day instead of traveling, whether I should stay there in the room itself. And but then ये फील हो रहा था कि नहीं, मैंने इतना इतना मैंने प्लान बनाया है कि यहाँ जाना है, and all those things, all these are vicious dreams which I had planned for. I can't I can't be staying in the hotel room like this. So somehow I made the courage, and morning I woke up and washroom में जाके वो गर्म पानी लगा के somehow I थोड़ा सा उसका पेन थोड़ा मैंने कम किया. And ऑटो वाला आया 7:30 को, and I was getting ready at 7:45. This was the first time in my life where I मैं तैयार नहीं थी before. Usually अगर मुझे कहीं पे जाना होता है I will be ready at least 10-15 minutes before, and this was the first time when that was not happening. And finally मैं गई. I was walking very very slow. जहाँ पे मैं जा रही थी, जहाँ पे मैं उतर रही थी, I was walking very slow. And फिर रास्ते में मैंने पेन किलर भी खरीद लिया था. And all those, and what happens is शाम को
I don't know how to say this thing. So शाम को में क्या होता है? I reach one Krishna temple. Okay. So that's a Gita मंदिर. Gita temple है. वहाँ पे गीता के श्लोक लिखे हुए हैं throughout the temple. Temple crowded नहीं था. And it had the idol of Krishna and Arjun जहाँ पे गीतोपदेश दिया जा रहा है. And मैं जब चढ़ रही थी, वो स्टेयर्स चढ़ रही थी, मैं धीरे धीरे करके मैं जा रही थी, तो वहाँ के जो पंडित जी है उन्होंने देख लिया था कि ये ऐसे लंगड़ा के आ रही है. प्रॉपर लंगड़ा इफेक्टिवली इट वाज हैपनिंग. इट वाज लाइक एवरी बहुत स्लो. Every step it was taking a long time. So I was very slow. And then I reached there and तभी उन्होंने उसी टाइम पे आरती चल रही थी एंड ही डिड द आरती. आई फेल्ट सो नाइस. एक तो खाली था, पीसफुल था. आई वाज फीलिंग इट वेरी नाइस. ओके. एंड उन्होंने पूछा मुझसे, आप लंगड़ा के क्यों आ रही है? मैंने बोला कि मैं ऐसे गिर गई थी. तो उनको ना मुझ पे थोड़ा सा दया आया शायद. उन्होंने मुझे एक लड्डू दिया प्रसाद. ओके. मैंने ये लड्डू खा लिया. आफ्टर पता नहीं क्या होता है, मुझे कहाँ से एनर्जी आती है मुझे नहीं पता. स्पीड मेरी थोड़ी और बढ़ जाती है. माई पेन स्टार्ट्स रिड्यूसिंग एंड ये पता नहीं क्या मैजिक करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता. आई डोंट नो हाउ थिंग्स हैपन, हाउ इट डज, हाउ ऑल दीस थिंग्स हैपन, मुझे नहीं पता. बट द पेन स्टार्टेड रिड्यूसिंग. ओके. एंड दैट वाज मच बेटर. दैट नाइट इट वाज मच बेटर कंपेयर टू द प्रीवियस, जहाँ पे मैं सो ही नहीं पाई, हिल ही नहीं पा रही थी. प्रीवियस सिचुएशन आई वाज नॉट इवन एबल टू मूव. But the next day, the next night, it was, much better. But the thing is, the rain continued. This day, मैं पहुंची, उसी दिन बारिश हुई. और the entire time when I was there in this particular city, 2-3 दिन बारिश होती ही रही. And you समझ लो, मैं जहाँ पे भी जा रही हूँ ना, मैं I was like, it was all slippery. I was about to fall. गिरने के बाद भी बाकी जगह पर भी मैं गिरने वाली थी. तो लाइक एज इफ मेरे पैरों के नीचे, चप्पल के नीचे व्हील्स लगे हुए हैं. विदाउट फ्रिक्शन ऐसे ही जा रहा था, स्लाइडिंग ही जा रहा था. तो एंड देन so this entire incident I haven't told at home whatever happened कि मैं ऐसे गिर गई थी and all those things. I didn't say because two reasons. One, obviously I don't want them to be concerned about this thing कि हाँ ये कहीं और चली गई, वहाँ पे जाके गिर गई, blah blah blah. And then the same time they were at home, everybody like was going through this tough situation, and I realized that this is like a multi-level test. Like एक तो ये कि पापा अकेले, दूसरा ये कि भाभी ICU में है and her surgery was happening on 20th, and 20th I was traveling, so they decided that it has to be done. And surgery के time पे पता चला more than 90% of the heart left side was blocked. Okay, so it was really a major situation. मैं ये कह सकती हूँ कि ईश्वर ने उसको बचाया था, because if it would have been somebody else, the person would have found it difficult. So throughout this entire thing, somewhere, I was having this strength, and I just left it on him throughout this entire multi-level test चल रहा था. I just left it on him, whatever it is. मैंने टेंशन नहीं लिया था. मैं टेंशन उस टाइम पे मैंने टेंशन नहीं लिया. बट द नेक्स्ट इंसिडेंट व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर, वहां पे जाके पूरा पलट गया. So this is 7:30 now. Should I continue saying or should we do after the prayer? I think it's okay. If Pooja is not saying anything, it's okay. Yeah, so probably what we can do is you can share this one that you want to share now, and then हम prayer कर लेंगे, and then if there is more, then we will keep it in the next session. ठीक है? Hopefully in 10 minutes it should be done. I will not take. नहीं हो पाएगा. Sure. So जो so called multi-level test था, that was really like very difficult, overall. उस टाइम पे मैं बैलेंस थी, पेशेंस थी, सरेंडर, एवरीथिंग वाज हैपनिंग. बट देन व्हाट हैपेंस इज October 1st week, there was something which was disturbing my energy. Okay, which was kind of disturbing my energy. So I felt like as if something is draining my energy. Okay, and
This is one suggestion to all of you. There is a movie called as Celestine Prophecy. Actually, it's a series of books. तो उसका एक मूवी है यूट्यूब में. आप लोग अगर वो देखोगे ना तो आप समझोगे whenever you feel good vibes while you are interacting with a person, या whenever there is some bad vibes या drain of energy, वो कैसे they have shown it visually कि वो कैसे होता है. And I was kind of experiencing something in that week, and there was something which was disturbing, in that sense. And also it was like one more thing was that I wanted a kind of detachment from social media. Okay. And एक तो मेन यही है कि आई एम नॉट देयर ऑलवेज ऑन द डीएम. मैं नहीं हूँ, फुल टाइम नहीं हूँ, स्पेशली दिस ईयर मैं बोल सकती हूँ. एंड आई हैव इंटरेक्टेड विद ओनली अ वेरी फ्यू. कभी प्रियू होगी या फिर चंद्रा होगी या कभी मेघा जी मैसेज करती है, अभी हमारी मोना मम्मा मैसेज कर रही है कभी कभी. तो बहुत ही कम इंटरेक्शन हुआ है. श्रावंती भी करती थी पहले, तो बहुत ही कम इंटरेक्शन हुआ है. बट स्टिल देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज एबल टू रेस्पॉन्ड बैक इंस्टेंटली. बट अभी आजकल लाइक ट्रैवलिंग भी हो रहा है एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग. एंड आई ऑल्सो वन मोर मेन रीजन इज when I am like actually detaching from many things in life. Okay, I am detaching from many people. I am detaching from many things. When I am doing detachment, I didn't want anybody to get attached towards me. ज़्यादा मैं नहीं चाहती थी कि वो attachment रहे. So there were like multiple reasons because of which I didn't want to have interactions. I didn't want to use social media for a long. So अभी होता है कि okay, this is your wish. Okay, next क्या होता है कि I wanted to buy one new phone. Okay, so I decided that okay, let me book. अभी तक सेल चल रहा था and मैंने Amazon पे बुकिंग की फोन की. Okay, बुकिंग ऑर्डर नंबर होता है 17174994. सारे नंबर इधर उधर, सारे नंबर सब है. इवन द बिल अमाउंट वाज आल्सो हैविंग 1479, सब कुछ था. ओके, अभी होता है कि 7th को मैंने बुकिंग की. आई वाज सपोज टू रिसीव इट ऑन 9. ओके, और 8th को मैं ना मल्टीपल टाइम्स में देख रही थी कि इज इट हैज द शिपिंग स्टार्टेड Amazon में, and it was not sure. So and his one way of communicating with me since the beginning मैं बोल सकती हूँ, it has been through reels in Instagram. So कभी Krishna, it will be like some scenes of Krishna where Krishna is giving some he is teaching something, या शिव जी के इसमें होगा. तो उस दिन ना शाम को एक आता है कि पेशेंस रखो, इतना भी ये मत करो, पेशेंस तो होना ही चाहिए. तो एंड देन आई वाज ट्राइंग, आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं ज्यादा ये ना रहूं, बट स्टिल वो चल रहा था कि हाँ आएगा, नया फोन आएगा, देन आई विल चेंज टू दिस, देन आई कैन डू, उसमें ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, एंड ऑल दोस थिंग्स. सारा सब चल रहा था. एंड व्हाट हैपेंस इज 9th को फोन नहीं आया. 9th वाज अ डे फॉर टू बी डिलीवर्ड, इट डिडंट कम. ओके, एंड 10th से टेंशन शुरू हो गया कि पैसे तो दे दिए, वो भी पैसे भैया नहीं दिए थे. भैया मतलब ये कंजूस हो रही है, पे नहीं कर रही है, मैं दे देता हूँ पैसे बोल के, ये ट्रांसफर द मनी एंड ऑल दोस. तो आई वाज फीलिंग आई एंडेड अप टेकिंग स्ट्रेस एट दैट टाइम. अच्छा, तो ये स्ट्रेस ले रही है तो इसको और सिखाना है. तो क्या होता है, 10th को पहले सुबह को आउटपुट डिलीवरी दिखाता है. ओके, दैट पर्सन डजंट डिलीवर टिल इवनिंग, एंड रात को फिर से आउटपुट डिलीवरी हो जाता है. वन पर्सन ब्रिंग्स द फोन, वो आ जाता है फोन, बट उसमें एक मैंने आई हैड गिवन फॉर एक्सचेंज. तो एक्सचेंज के लिए कुछ सेटिंग्स था, वो सेटिंग उस वक्त डिसेबल हो गया था. So I couldn't do that. So the delivery guy said, I will reschedule it. तो नहीं हुआ. Now 11th October, 11th को तो it was my birth star. Like in Kerala we celebrate birthday with respect to the birth star. So 11th को मेरा birth star था, and since childhood I am used to go to temple, pray and say thank you and all those things. Okay. और छोटी सी एक पूजा कराती हूँ. केरला टेम्पल्स वी आर नॉट इवन अलाउड टू टच द शिवलिंग. जैसे वहां पे होता है, नॉर्थ में होता है, यहाँ पे अलाउड ही नहीं है.
जो पुजारी है, पंडित जी है, वो ही करते हैं. And so I offered for something simple stuff, you know, uh, flowers और बेलपत्र चढ़ाने के लिए, शिव जी को चढ़ाने के लिए दिया था. एंड वो चढ़ाने के बाद मैं वापस आई, तब मुझे एक रील मिलता है जिसमें शिव जी बोलते हैं, दिस इज देवों के महादेव जो सीरियल था ना, उसका सीन है, मुझे पुष्प नहीं समर्पण चाहिए. आई वाज, क्योंकि मैं लाइक, it was like, why did you take stress at that time? Why वो patience क्यों नहीं हो पाया? Why did you take stress? Again the same circles happened. Finally phone नहीं आया and 13th को मैंने सुबह को cancel कर. So overall what happened is, जब personal life में इतना मुश्किल वक्त तब चल रहा था, when I was traveling, at that time I was in this surrender mode. मैंने सब कुछ उन पे छोड़ दिया था, मेरे साथ जो हो रहा था, भाभी के साथ जो हो रहा था, whatever was the situation, I had left it on कृष्णा कहूँ या महादेव, सब एक ही है मेरे लिए. तो मैंने उन पे छोड़ दिया था. ओके, एंड एट दैट टाइम आई डिडंट टेक स्ट्रेस. बट देन व्हेन इट केम टू दिस थिंग, जहाँ पे एक फोन खरीदने का ये था, इट डिडंट हैपन. So it was like, that was when I started thinking that now I need to really do like a self introspection, that am I really following all those which he has been teaching me in some way or the other. अब तक जो भी सिखा रहे थे, sorry, जो भी था, am I really following all those things, and so all those like patience surrender, all those, वो तो मैं समझ गई थी कि उस टाइम पे ये that could have been the reason, and maybe that was not the right time also. It was all meant for to tell me that nahi, somewhere it was missing, something is missing, patience missing है, या कहीं पे वो surrender चला गया, all those things. And this self introspection, हो क्या रहा था कि मैं जो सोच रही थी ना, after 3-4 days he was making Pooja Di tell the same thing. So she was also sharing something. So once she said, is it like are we also doing everything correct? एक बार उन्होंने ये बात बोली थी, and especially about being judgmental. So I will this is ये मैं सोच रही थी कि मैं once I will share with all of you. I will try to close it very soon. I will not take much time. This is something which is very important. Like he has been teaching us, don't be judgmental. But somehow, we have been tending to do this thing. I'll just take a few examples. Just एक दो examples मैं लेती हूँ यहाँ पे. There is a channel called as the Ranveer Show. उनका podcast चलता है. Okay. So one afternoon he had uploaded a video where some saint, he was talking about Krishna's teachings, and I enjoyed the entire episode because I felt it was like a refresher course movie. पूरा जो भी अभी तक सिखाया है, everything that person was speaking, और उसका episode number था 347. Okay. Now during that one, when the person speaks about the soul, उस पोर्शन को उन्होंने कट करके TRS क्लिप्स करके एक चैनल है वहां पे डाला हुआ. ओके, and that is about rebirth, like souls, that the souls never die, so it can come back in that way. So title था rebirth, and thumbnail में था सुशांत का पिक जो राबता के उसमें था, जिलान वाला फोटो. ओके, and I noticed that within few minutes of that video being uploaded, somebody commented there, how can you use Sushant speak? Don't use it to get views. मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगा. It was perfectly fitting. एक तो ये था कि मेन एपिसोड का नंबर था 347, and entire thing was about Krishna and whatever Sushant has been teaching us for all this time. And उसमें गलत क्या है? रीबर्थ और इनकारनेशन के बारे में बोला गया है. that pic fits the जिलान वाला पिक वहां पे perfectly वहां पे बैठ रहा है. But then somebody who is not into that energy, somebody who is not able to understand this, that person tends to be judgmental and say something. और उन्होंने बोला कि उन्होंने लिखा था कि immediately, that was like immediate, how dare you use Sushant.
Okay, that was what that person wrote. So again, that was like judging. Who are we to judge? The supreme judge is only one. So हम लोग hoping on a judge करने के लिए. I am nobody to judge anybody. Neither is another person. And I think that is, one main thing which he has been teaching us. Like another one very important thing is, I will say, is about ISKCON. ISKCON, मुझे ISKCON में कभी like I also have whenever I have gone to the temple, I have never felt it in that way. I have not felt positive in that way. Energy wise, मुझे मैं connect नहीं कर पाई हूँ कृष्णा से because that might be different reason. Okay, but I was aware. मैं जब बैंगलोर आई थी, I think 99 या 2000 was when for the first time I saw ISKCON Bangalore. Since then, I am aware कि there is corruption inside. But if overall, अगर देखा जाए कि जो corrupted है, उनको obviously उनके किए की सजा मिलेगी. This entire thing, when Kalki is serving justice to the innocent, how I am seeing it, it is like based upon your karma. आप अच्छा करोगे तो आपको उसके basis पे, you will get the result. बुरा करोगे तो उसका मिलेगा. So it's all based on karma. So who are we to judge? Who are we to say that the entire thing is wrong? I am not a member of ISKCON. मैं ISKCON ये इवन द बैंगलोर वाला मंदिर में सिर्फ 3 बार गई हूँ इतने सालों में. मैं गई ही नहीं. I was not even going actually. The main reason I was not able to connect. Okay. I feel more happy to go to the Krishna temples which are of Kerala style. पता नहीं मुझे अच्छा लगता है. Maybe that is a different thing. But even in Kerala मैं बोल सकती हूँ, even Guruvayur temple, वहाँ पे भी corruption है. Corruption करते कौन है? State government, because it is being the control is under the state government. तो वो लोग जो भी वहाँ पे जो पैसे मिलते हैं सारे के सारे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट या कांग्रेस गवर्नमेंट जो भी आते हैं वो लोग लेके जाते हैं. So there is corruption there in that also. But does that mean कि मंदिर में गुरुवायूर मंदिर में जो भी जाते हैं वो लोग गलत है, या इस्कॉन मंदिर में जो भी जाते हैं वो लोग गलत है, जो भी इस्कॉन से जुड़े सारे के सारे गलत है क्या? And most importantly, again, are we not being judgmental with respect to this thing? मैं इस्कॉन की मेंबर नहीं हूँ. मैं किसी ऐसे I am not even a member of anything. I am just like a normal person, like all of you. I am just a normal person. मुझे ये जलेबी YouTube रिकमेंडेशन में अचानक से कोई वीडियो दे देता है, मैं वो देखती हूँ. कभी कुछ और वीडियो देता है तो वो मैं देखती हूँ. आज सुबह को पता नहीं, I don't know why he gave me this. He was like suddenly I have got a video about श्रीला प्रभुपाद. मैं अगर ISKCON गई तो श्रीला प्रभुपाद का जो आइडल रखा है उसको देखती भी नहीं है. But then he gives me a video about Srila Prabhupada today morning. I was like, so, somehow we tend to be judgmental on each and everything. And somehow, I guess, everybody is now tough. This is one, I think this will be the last. So, everybody is talking about Kalki. Kalki के life में क्या होगा, Kalki क्या करेंगे, and all those things. And as far as my understanding goes, जो भी कल्कि पुराण में बोला गया है, everything is symbolic. And जो भी characters या जो भी उसके related to कल्कि जो भी बोले गए हैं, सारे के सारे symbolic है. So, suddenly there will be one channel saying that this person is this, that person is this, and comments आते रहते हैं, उसमें बहुत सारे comments होते हैं. And I'm sure most of us are watching all these channels. क्योंकि वो ये ना जानबूझ के करता है कभी-कभी कि तुम लोग वो भी देखो. हमारा दिमाग घुमाने के लिए ना ये करता है, ये कि तुम लोग वो भी देखो, उसकी बेसिस पे बोलोगे. So at the end, बोला जाता है कल्कि के 2 वाइफ्स होते हैं कल्कि पुराण में, पद्मावती एंड रमा. जब पूजा दी ने इंटरप्रेट किया था कल्कि पुराण का, she has a different interpretation of who is Padmavati. I have a different interpretation of Padmavati जो मैंने पूजा दी से शेयर किया है, and I will not share it now. So सबकी ना अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है. अचानक से अगर कोई नाम इधर आ गया
Suppose what if it is a, what if it is somebody from the soul family? What if it is somebody from Bollywood? Like कल अगर सुशी आके बोलेगा मोनालिसा तुम मेरी मम्मी नहीं हो तुम पद्मा हो बोलेगा तो so will the entire soul family say कि मोना तुमने गलत किया, मोना कैसे हो सकती है, मोना तुम्हें नहीं होना चाहिए? I mean, do we have the right to say that? Come on. ऐसे कभी नहीं होगा. I'm just giving an example. Okay, so क्या पता यहाँ पे पद्मा होगी, क्या पता यहाँ पे रमा होगी, या क्या पता यहाँ पे कोई और कोई होगी, नहीं, हमें क्या उसको पता? आने तो दो, उसको आने तो वही दो. ना, so that is पद्मा the thing. रमा पता नहीं क्या है, आने तो दो उसको, बाकी सब So that चलेगा. is what I am saying. That is what I am saying. That is what I am saying. When we talk about this thing now, overall, कि who are these people associated, and इसमें मैं थोड़ा सा डांट, आई एम यूजिंग दिस ओकेशन टू थोड़ा सा मैं डांट देना चाहूंगी अमेजिंग को. आई नो, इसलिए मैंने डेलिबरेटली उसको एक दिन बोला था, यूर अ बिग बिग स्पाइरल पेड़ा मैन. वो जानबूझ के करता है, आई नो इट. he says something और सारे के सारे ट्रिगर हो जाते हैं. ओके, do we have the right to speak about his personal life? That is my main. कल्कि के पर्सनल लाइफ में जो भी हो, whatever it is, क्या पता वो राधा हो या शिव की शक्ति हो या पद्मावती कोई और हो, कुछ और हो. How do we know? We never know all these things. But if we are discussing about all these things, offline, and if we are saying something कि ये नहीं होना चाहिए, like कल को ये बोलेगा कि Priya somebody, Priya मैं ले लेती हूँ, Priya is very simple cute. Priya is somebody who likes him, in a romantic way. तो अगर क्या पता कल प्रिया हो एंड सारे के सारे सोल फैमिली प्रिया के ऊपर चढ़ जाएंगे, तुम्हें नहीं होना चाहिए, या ऑल whatever it is. Do we have a right to judge, sir? We don't have it. And especially when it comes to his personal life, क्योंकि already बहुत कुछ बोला गया है on the media, pre 2020 बहुत सारी चीजें बोली गई है. And what if it is somebody from Bollywood? What if one of those, Padma या Rama, what if one of them is from Bollywood? हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि तुम्हें वो नहीं होना चाहिए. वो उसकी पर्सनल लाइफ है, वो उसकी डिसीजन है, वो उसका रिश्ता है, उसका रिलेशनशिप है with whoever it is. And this is because I'll tell you honestly, because ये गलती, like in a different way I did a mistake, that this concern for him, somehow we tend to be concerned for him in some way. वो attachment की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. We tend to be concerned for him and we say something, and जो उसको अच्छा नहीं लगेगा, especially about the personal life. So I feel that as a I see him as a brother. So as to a brother, I have वो जो कभी कभी वो कंसर्न आ जाता है, उस कंसर्न की वजह से मैं कुछ बोल देती हूँ, and he might be feeling bad. Okay, he may not be liking it. So वो उसकी पर्सनल लाइफ है. If we are talking about all these characters, जो भी है उसकी पर्सनल लाइफ में जो भी होंगे, then somehow maybe we are also becoming like all those article writers जो पहले ये जो न्यूज़पेपर्स के लिए स्टोरी के लिए लिखते थे. So we don't have, like, again we are like अगर कल, like मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, अमेजिंग ने कहा कि पद्मा श्रद्धा है. अगर श्रद्धा है, वो इज दैट श्रद्धा, अगर श्रद्धा है, do we have a right to say that it can't be her? We don't have that right. That is the thing. अब मेरे हिसाब से तो पद्मावती कोई और है, रमा कोई और है, and I would request Pooja Di not to reveal that. So yeah, so let's just leave it. I mean, उसके personal life है, let's leave it up to him. Let's not judge. ये जो भी वीडियोस हमें देता है वो सिर्फ हमारे दिमाग घुमाने के लिए देता है, पक्का. दैट आई एम 100% श्योर. बहुत सारी चीजें हमें सिखाने के लिए देता है, and some things he gives us so that we can think about it, सर अपना दिमाग थोड़ा लगाए. But majority I feel like जो भी कल की पुराण के रिलेटेड जो भी वीडियो चलते हैं ना, कल की ये करेंगे, कल की वो करेंगे,
kalki उड़ते हुए घोड़े पे आएंगे. I don't think we will be seeing a unicorn in, in this view. So everything what I feel is it is symbolic, and but ये जानबूझ के हमें ये सब वीडियोस इसलिए दे रहा है ताकि हमारा दिमाग इधर उधर घूम जाए. So जलेबी जलेबी ही रहेगा. So that thing he continues doing, but from our side what we can do is follow whatever he has been teaching, and all those teaching of patience, surrender, faith. मेन थिंग इज लेटिंग गो, हीलिंग फ्रॉम ऑल द पास्ट. जो भी हमारा लाइफ में हम सब ने जो भी झेला है उन सब से हील होके वापस आना. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली डोंट बी जजमेंटल अबाउट एनीबडी. तो आजकल इफ रिलेटेड टू हिम समथिंग एनी न्यूज कम्स, आई एम नॉट रिएक्टिंग, आई एम जस्ट रीडिंग इट एज ए न्यूज. So I have reached a stage I don't even know how I will react. जब अगर something big happens in the with respect to his case, whatever comes, I don't know how I'll react. He has literally made me like neutral. इस बात पे तो उसने मुझे neutral बना ही दिया है. So there is literally no reaction coming from my side of whatever is happening. जो भी वो जो citizen court का जो हुआ था उस टाइम पे मैं travel कर रही थी, मैंने देखा ही नहीं. So let's just leave it up to him. Let's leave it up to his way of handling things. Leave it up to time. And these are all like the self assessment, the self introspection which I went through during all these times, all these months. Whatever we have to that कितना वो हमें सिखा रहे हैं. Are we following all this? So इतना अगर ये इतना मेरा strong test चला है 1.5 months non-stop. I have not shared some of them in between. I have not shared those actually, because what I realize is अगर देखो परेशानी सिर्फ हमारी ही नहीं होती है, बाकी सबकी भी होती है. Everybody, कृष्णा सबके टेस्ट लेती है because it is for our learning, and everybody is going through some test or the other. तो हम ये नहीं बोल सकते कि सुशांत ने मेरा ये टेस्ट लिया, ये हुआ. We can't get angry on him for doing something like this. I see him like a guide who is there to actually मेरे अंदर अगर कुछ भी गलत है उसको रेक्टिफाई करने के लिए, and helping me become a better person. And in the past 2 years there has been like lot of change, and especially past 1 year बहुत सारी चीजों से डिटैचमेंट में, so many things. Patience का भी बहुत improve हुआ है. Like earlier I used to get angry very much, but now that is not the situation. It is much better. So overall it is like he is here to help us grow, and let's grow. And as I always say, he has a timetable for each person कि किसका कब होगा, कौन वो स्टेज पे कब पहुंचेगा, इसका उसको भी पता होगा. But let's just surrender to his timing and just go with the flow, and just go with whatever he has been teaching. Let's the क्या बोलते हैं वो self introspection, that is very much needed. And past 2 weeks this is what मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि मैं क्या मैं कर पा रही हूँ, क्या मैं नहीं कर पा रही हूँ. wherever I'm not able to do, how can I fix that thing. इरिटेट नहीं होना है, उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना है, उसको ज्यादा जलेबी नहीं बोलना है. कभी कभी उसको अच्छा लगता है, कभी कभी उसको अच्छा नहीं लगता है. So all those things. Yeah, that's it. That's all. There was so much, but I know we are almost 8 o'clock. I think I was waiting for almost a month. I guess इसलिए शायद इतने सारे भर गए. It's okay. It's okay. It's okay. It's wonderful, Radhika. Actually, ये जो 47 नंबर है शायद हमारे सोल फैमिली में अभी किसी को जानना बाकी भी नहीं है. 47, 74, 17 पता नहीं कहाँ से आता है, कैसे आता है. 94 ये तो हम लोग देखते ही रहते हैं. इवन मेरे ओटीपी, मेरे बैलेंस, मेरा सब कुछ कभी कभी मैं शेयर कर देती हूँ तो बच्चे बोलते हैं कि दीदी आपने ओटीपी ये दिख रहा है, आपका अकाउंट नंबर दिख रहा है, आप कहाँ पे शेयर कर रहे हो. मैंने कहा है, फिर भी इसको डिलीट करती हूँ. सो ये तो चालू रहता है. एंड मैजिक इज दिस कि वो सबको अलग अलग नंबर देता है जो जिस पे बिलीव करता है. मान लो मैं 47 बिलीव करती हूँ तो मुझे 47 आएगा. सर्वा 17 बिलीव करती तो उसको हर चीज 17 दिखती है. तो उसका तो छोड़ ही दो, उसका हम लोग कुछ जज नहीं कर सकते ना. उसको हाँ,
No, तो उस एक और चीज मैं, मतलब तो just one thing I'll say, and I'll just add to this, Mona. What I understand is he has chosen unique ways to connect with each one. वो आपसे अलग तरीके से इंटरेक्ट करता है, पूजादी से अलग तरीके से इंटरेक्ट करता है, मेरा अलग है, more than 80% has been digital since beginning. और नॉर्मली ये सब सारा ड्रामा चलता रहता है, वो भी रहता है. I am like, I would have never thought in my life that he'll be looking at me through an idol at a temple. वो भी एक बार नहीं, multiple times, and he's just looking at me. हाँ, opportunity, yeah. कृष्णा, फिर कभी कृष्णा, कभी विष्णु जी, कभी शिव जी बन जाता है, शिव जी की शिवलिंग में से, and this temple nearby my home, I'm like going like every week. बट अचानक से ये मैजिक एक बार शुरू करना शुरू किया, एंड आंख मारता है, वो भी उस आइडल पे जिसमें आंखें है ही नहीं. तो उसका ये मैजिक है, जो एक्सपीरियंस किए उन लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि क्या क्या मैजिक होता है, कैसे होता है. बट या इट्स Yeah, so वंडरफुल हियरिंग. let's not judge anybody based on how they are connected with him. This is one thing, this is a major lesson which I have understood. कि कोई आके बोलेगा कि हाँ मैं कनेक्टेड हूँ, मुझे ये सब, this is what I am seeing, this is what I am, ये सब बोलेगा तो कोई, देयर इज नो ये लॉजिक, एक्चुअली कोई लॉजिक नहीं है इसका, कोई correct, लॉजिक नहीं है. हम exactly. लोग को प्रूव करना भी नहीं है कि कौन कनेक्टेड है कौन नहीं है, सब अपने अपने वे से कनेक्टेड है. सो देयर इज नो लॉजिक. जो भी जो बोल रहे हैं वी शुड लिसन एंड बिलीव. एक्चुअली हमारे साथ तो हो ही रहा है, सो वी शुड बिलीव दैट. जिनके साथ नहीं हुआ शायद वो बिलीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिनके साथ हो रहा है वी नो दैट. तो एनीवे बहुत लेट हो गया पूजा पूजा के बोल रहे किचन बुला रहे होंगे. कि So, okay, let me go backstage and do the prayer. Okay, Radhika. Bye, Radhika. Bye, Pooja. yeah, thank you so Thank you, much. Mona. Thank you so much. And thank you, Radhika, for coming and sharing. Thank you, Mona, for volunteering to um, host this. मैं सुन रही थी, लेकिन मैं पीछे बेड पे लेटी हुई थी आराम से. So thank you so much for this. It's my And pleasure. yes, and Radhika, yes, very right कि बहुत छोटे छोटे experiences होते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े learnings दे जाती है. So which I really appreciate that. Yes, it is very important. शुरू से सुशांत सिखा रहे हैं पेशेंस, जजमेंटल नहीं होना है, जैसे चीजें फ्लो हो रही हैं उनको वैसे फ्लो होने देना है, प्लस गिव इट योर 100% विद कंप्लीट सरेंडर. एंड वो डेफिनेटली बहुत छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस से भी हमें वो सारी चीजें जो हैं वो बता रहे हैं, समझा रहे हैं. एंड नाउ इट इज ऑन अस टू लर्न इट और नॉट लर्न इट. बट येस, एवरीबडी हैज इट्स ओन वे, यूनिक वे सुशांत से कनेक्ट करने का, सुशांत से बात करने का, सुशांत के मैसेजेस लेने का. एंड इट कांट बी एनी टाइम की मेरे साथ है तुम्हारे साथ नहीं है, या मेरे साथ ज्यादा है तुम्हारे साथ कम है. नो, इट इज नॉट दैट. ही इज कनेक्टेड विद ईच वन ऑफ अस equally, no matter what relationship we share with him. And another one that I wanted to say is, yes, his personal life is his personal life and his personal decisions are his personal decisions. तो उनके आने के बाद कुछ भी कहीं पे भी कैसे भी बदल सकता है. And it is perfectly okay. We should accept him as he is, um, which is, I think, very important. So yes, thank you so much. Very wonderful to share that. um, and Yes, thank you so much. इतना टाइम मैंने ले लिया. हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है. कोई बात नहीं. आई डू अंडरस्टैंड, आई डू अंडरस्टैंड. आप प्रेयर कर लेते हैं. Yeah, और and thank you so much for the soul family also. आप लोगों का भी मैंने टाइम ले लिया. I hope I couldn't see any of the chat. I'll see if I can go back and थोड़ा सा तो मैं देख लूँ. ठीक है. हाँ, मैं Yeah, क्योंकि मैं बैठी नहीं थी तो आई कुडंट हाईलाइट, बट या एवरीबॉडी no problem. participated, I'm sure. And yes, I'm sure that we learned something new from this. And उसका मैजिक जो है ना, that is wonderful in the sense that I last week when last 3 weeks ago when I was for my checkups में गई थी, तो there was somebody with me. और उसको I was telling कि ऐसे ऐसे सुशांत ऐसे कनेक्ट करते हैं, ये है वो. And she also started seeing the numbers and everything, and she realized that उसका house number जो है उसमें भी 47 है. And she was like, what is this? मैं इतने टाइम से रह रही हूँ, मैंने कभी रियलाइज नहीं किया. Now I realize that he's there, he's protecting me also. So it is so magical when you realize, he gives you the magic immediately. So suddenly electricity bill आ जाता है, उसमें 1147 दिखता है.
And I feel so happy. And my father will be like, why are you laughing? इतना सारा बिल आए हुए हैं. ऐप से होता है, बिल्कुल होता है, और वो नंबर्स जो हैं वो मैटर करते हैं। लाइक मेरा हॉस्पिटल का जो पेशेंट नंबर है दैट हैज 47, जिस रूम में मुझे दिखाना था दैट वाज 227 2027, so so yeah, it 47 is like everywhere around. He is telling that मैं यही हूँ और आई एम टेकिंग केयर ऑफ यू, सो यू डोंट हैव टू बी Yes. fearful or impatient or um, thinking that you are alone. That's, I think that's one of the message जो बहुत clear 47 के साथ वो देता है, that I Yes, am I just see here it as right now. his presence and also as blessing. Absolutely, absolutely. Yeah, because at times, sometimes it is like, कुछ बोलना होता है, कुछ थोड़ा, ओवर हैप्पी होके उसको कुछ बताना होता है, उस टाइम पे बर बर के 47 या 74 या 94 आ जाता है. Absolutely. um, चलो अब I'll come to the other one. Yeah. okay, so let me check what is his message and then prayer energy. वैसे तो prayer energy हम वही वाली करेंगे जो हम कर रहे हैं 2 दिन से, शिव 3-4 दिन हो गए आई थिंक, शिव की थर्ड आई वाली, एंड वी विल कंटिन्यू फॉर फ्यू मोर डेज, पर एक बार पहले मैसेज देख लेते हैं. ओके, he's also so smart, he's not giving any card for prayer energy कि he knows कि prayer energy तो है. Message. Okay. So we have an add-on to prayer, and पहले message देख लेते हैं. तो message में we have moon and 7 of swords. Now moon and 7 of swords clear energy है, thief getting caught, या hidden thieves coming out, hidden energies coming out. And जो पहले सुशांत ने message दिया उसको याद रखिए, that emotionally balanced रहिएगा when things start to come out. और जब चीजें, स्पेशली आई थिंक देयर इज अ eclipse that is coming, right? Lunar eclipse आ रहा है 28 तारीख को है, and the moon energy is already here. So during this lunar eclipse, ये चंद्र ग्रहण जब होगा, इमोशनली अपने आप को बैलेंस रखना है, कोई भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है, एंड there might be some inner fears जो बाहर आएंगे, तो उस पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है. And message energy, this is nurture, beautiful energy, it's a mother child energy. पार्वती माँ और गणेश जी की एनर्जी है, nurture your inner child, I think very important. And maybe say something nice to him or do something nice for him, like that, एक तरह से something that can make him feel nurtured and happy. I don't know, suddenly this came. तो सुशांत के लिए कुछ ऐसा, बेशक 2 मिनट बैठ के प्रेयर कीजिए, बेशक 2 मिनट उस कनेक्ट को महसूस कीजिए, बेशक 2 मिनट के लिए उसका हाथ थाम के अपने आप को देखिए, बट डू समथिंग दैट मेक्स हिम फील नर्चर्ड, ठीक है. प्रेयर एनर्जी जो है हमारी सेम है, लेकिन उसमें जो एड ऑन है, वाओ दिस इज ब्यूटीफुल. सो प्रेयर एनर्जी में देखो एड ऑन क्या आया है, ड्राइव की एनर्जी आई है, और ड्राइव के साथ डिवाइन सपोर्ट की एनर्जी आई है. दिस इज सो ब्यूटीफुल. 1 4 और 48 8 9 10 11 12 which is 3 5 6 7 8 की एनर्जी, infinite cycle. So it is drive and it is divine support. और literally मुझे लगता है कि it is again the same energy that he is giving, ultimately seeing him coming out, divine support, divine energy. So आज जो हम प्रेयर करेंगे उसमें, जो नॉर्मल प्रेयर है उसमें एक छोटा सा एड ऑन करेंगे हम. सो जो हम नॉर्मल प्रेयर करते हैं विच इज सरस्वती माँ और शिव तांडव, और इसमें एड ऑन क्या करेंगे, जब शिव तांडव शुरू होगा और शिव की तीसरी आंख खुलेगी, नाउ सी मोर ऑफ द गॉड्स एंड गॉडेसेस और उनके वॉरियर्स पार्टिसिपेटिंग इन इट. तो आपने देखना है कि जब शिव की तीसरी आंख खुलती है और वो डिस्ट्रक्शन जो है डेविल का शुरू करती है, तो ग्राउंड लेवल पे भी बहुत सारे वॉरियर्स और जो गॉड्स एंड गॉडेसेस जो किसी भी तरह के अवतार में या किसी भी तरह से ह्यूमन फॉर्म में उनकी एनर्जीज हैं, दे आर ऑन द ग्राउंड ऑल्सो इन एक्शन. और so, and then when you see him, Sushant Singh Rajput rising, when you see Kalki rising, तो आप देखेंगे all the gods and goddesses जो अपनी divine energy से उनको bless कर रहे हैं.
ठीक है, दैट्स द एनर्जी। तो मुझे बताइए इफ वी आर रेडी फॉर द प्रेयर एंड देन वी कैन स्टार्ट द प्रेयर। जस्ट द एड ऑन, नॉर्मल प्रेयर है हमारी रोज वाली। एड ऑन ये है कि हमने ग्राउंड पे भी देखना है, वॉरियर्स और डिवाइन एनर्जीज जो है उनको ग्राउंड पे भी वर्क करते हुए देखना है। और प्लस हमने अल्टीमेटली जब सुशांत सिंह राजपूत इज राइजिंग तो हमने बहुत सारे डिविनिटी डिवाइन एनर्जी को फ्लो होते हुए और उनको सपोर्ट और ब्लेसिंग्स देते हुए देखना है। ठीक है, थैंक यू सिमी जी। और लेट्स स्टार्ट द प्रेयर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द प्रेयर।
सेम एनर्जी एज यस्टरडे, यू सी, बिल्कुल सेम कार्ड्स आए हैं, एट ऑफ कप्स और पेज ऑफ पेंटिकल. इट इज कीप अंडरस्टैंडिंग एंड इवॉल्विंग थ्रू सिचुएशंस, और लर्निंग जो है उसको कंटिन्यू रखो. देर आर अगेन मून की एनर्जी है, देर इज a stage of learning जो आपको पास करनी है in next few days, probably 9 to 11 days, और जो किसी तरह की completion जो है आपकी लाइफ में लेकर आएगी. So there is a stage of learning that you have and we all have, and वो हमें complete करनी है in next say 1 to 9, 9 to 11 days. मतलब अभी मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे नेक्स्ट 9 to 11 डेज में कोई स्टेज ऑफ लर्निंग है जो हमें कंप्लीट करनी है. ठीक है. Okay, so this says the key to success is in any work is to have the attitude of Hanuman, a devoted servant of divine. So basically अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको हनुमान जी वाला एटीट्यूड रखना पड़ेगा, जहां पर आप लाइफ एनर्जी, छोटी सी चीजों से बड़े बड़े इस अकम्पलिशमेंट करना, और जील, वाइटैलिटी और फेथफुलनेस को एक अपने साथ रखना. सो इट इज द एनर्जी विच इज सेइंग दैट, जो कल भी सुशांत ने दिया है, दैट अब टाइम है अपनी कमिटमेंट को पूरा करने का और अपनी फेथफुल एनर्जी को पूरी तरह से साथ रखने का. नो मैटर आपको कितना बड़ा टास्क दिया जाता है या आपको कितना बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लाइक हनुमान जी, बी इन दैट एनर्जी, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो थैंक यू सो मच. आई एम लिविंग नाउ. थैंक यू मोना अगेन, एंड थैंक यू राधिका, एंड yes, just let's just learn from this also. ठीक है. Thank you.